Hi guys, before you start watching this episode, we have a little disclaimer for you. We shot this episode earlier this year around Valentine's Day, but due to some technical difficulties, we couldn't release it at the time. But we are bringing this episode to you now because we firmly believe that every day is Valentine's Day. And Galentine's Day, so whether it's February or not, this episode will still serve you because It's wrapped with dating tricks and tips, first date do's and don'ts, all the dating advice that you need, which is absolutely timeless. So this is a very timeless episode and you can watch it now and it'll still be relevant and fun. So let us know how you like it, and in the meantime, enjoy watching this. if you're interested in a girl, let her know that you're interested in her, right? Don't act cool. You know, those mind games are for your 20s. Yeah, right? and Make it early 20s, obvious. by the way. Late Yeah. 20s wali advice mat lo. Matters of heart were always supposed to be easy. How did we humans manage to complicate them so much? I speak less on first dates. ये मेरे को साधका से सीखना पड़ेगा. ये वैसे मेरी बहुत बड़ी गलती है. मेरा ना वो वाला सीन है कि थोड़ा सा पूछने पे सब बता देती हूँ. मैं कहीं चैट जीपीटी तो नहीं. First date rules क्या है तेरे? Early evening dates, no late night dates, no picking and dropping, go yourself, come back yourself. Always split the bill. And if he does not allow you to split the bill, then you go to a low-key place so that it doesn't burn a hole in his pocket. मेरे नॉन रूल्स हैं थोड़े से. Wherever you go, whether it's for a party with your friends or with your boyfriend or date, you should be able to handle your liquor like a pro. I take deep notice of the guy when he's driving a car. जब तुम दिल्ली की रोड पे गाड़ियाँ चला रहे होते हो ना, तो 10,000 लोग तुम्हारा खून ऐसा किलसाएंगे ना कि उसमें तुम्हारी गालियाँ निकलेंगी. Don't abuse on the first date. Save it for the third. ठीक है? वो प्रेशर सिचुएशन कैसे हैंडल कर सकता है, वो बहुत बड़ा फैक्टर है. I would want to see their instinct when they're dropping me home. Do they lean in for a kiss or not? Should they or should they not? Hi guys, I'm Radhika. Hi guys, and I'm Sadhika. And on popular demand, we are here with another exclusive episode between Radhika and Sadhika only. Yes. We thought why not talk about our favorite topic, which is Love. and relationships. Yes. Although I have taken this position before where I have said that I find Valentine's Day quite cringe. But because I find Valentine's Day quite cringe, I have grown this certain fondness for Galentine's Day. Which is why अब जब भी Valentine's Day आता है, I really look forward to it. Because, you know, like Radhika and I are always planning and picking places कि हाँ ठीक है कहाँ जाना है इस बारी, where do we want to go, where do we want to sit and chat and probably watch a movie or something. Yeah. Did you buy your gift for me yet? Yes, I have bought 2 gifts for my Galentine here. And I've also actually picked a place for us. There's this new place in town which I really want to explore. It's called Barbits and Bells, I think. Barbits and Bells ऐसे ही कुछ करके GK में है. I think it's a speakeasy bar or something. Okay. And I'm quite excited. Maybe we'll go there to try cocktails. I'm very excited. Yes. Yeah, so until Sadhika's Jiju arrives, I'm forced to spend my Valentine's Day with Sadhika. Forced. But actually, you know what, I like it. I think even when your Jiju does arrive, we'd still be celebrating Valentine's. Oh, absolutely. I mean, like मैं तो कभी Valentine's नहीं celebrate करूँगी. तो मेरा तो See, you 14 never know. February Never open say ही never. होगा. Never say never. But why not? I know for a fact I'm not that person. Huh, but then you never know. What if your partner wants it? You're not that person, but you still go through the trouble of buying me a gift and actually making it special because I like it. And you know that if there's nobody in my life to do it, you step in to do it for me any which way. So if your partner tomorrow, let's say, is cheesy and has a thing for celebrations, which men rarely ever do, they usually do it for women. But let's say अगर कोई ऐसी भगवान का बंदा टाइप हुआ जिसको actually में पसंद है, celebrate करना, तो फिर you'll probably do it for him. So हाँ never मतलब know. I don't mind a little cheesiness. I think it's cute. Sadhika, But- you are very cheesy. You are cheesy in Sadhika way. नहीं मैं कह रही हूँ receive करना. I don't mind receiving a little cheesiness. It's quite cute, but then for me there's a thin line between cheesy and ick. I think this is complete hypocrisy. Why? Because तू अपने तरीकों से cheesy है, तू अपने तरीके से बहुत ही relationshipy है. Relationshipy. You just don't want to buy into the stereotypes. For example, you don't believe in setting a date. You don't believe in having a date of officially starting dating. ठीक है? नहीं I do believe in it, but Now- have I done it? No. हाँ, but whatever. So तेरा वो वाला नहीं है. Like you'll never know a specific date as to when to celebrate your anniversary, right? Yeah. So you don't believe in those stereotypes or a Valentine's Day or maybe a proposal for that matter. I don't know if you Yeah. want a proposal, but whatever. But then if you're in a relationship in your own unique ways, you are the most relationshipy
person ever. That is true. I'm quite घरेलू like that कि जब एक बार Gharelu, relationship में आ गई- you will blush and you will smile and you will lower your voice and you'll be like, "Nahi, please na, but karo na," and you know all of that, which is like, I don't know. It's just so difficult for me to digest when I see you like that with any human being, whether it's and in the relationship it's still fine, but when you're not in a relationship or you're in another phase. And then when I see you act that way with somebody, it is cringe. It is cringe pro max. And speaking of cringe, because we all do relationship cringe stuff. behaviors that are cringe to our friends, not to us. Why don't you tell me? You've never told me this. Okay, what is this your relationship chance. behavior This that is I your find cringe? Yes. This is your chance to Okay. Okay. I'll spot tell the you. cringe in me. Okay. I will spot the cringe in you. So first things first, I do think that you're a fabulous person. Any guy will be lucky to be dating my best friend. In fact, वो वाली जो reel आजकल viral हुए Instagram पे ना, that you have the hottest best friend and the person is like, but I am your only best friend. I'm like, yeah, that's right. So I will dedicate that to you. But having said that, you are quite a handful in a relationship. So तेरे cringe behavior में I think पहली चीज तो ये आएगी कि I think I find your hypocrisy a little cringe कि भाई मैं खुली बोर्ड को क्या कहते हैं? सांड नहीं, मैं बोर्ड कह रही थी खुली पतंग. कि मैं आज़ाद पंछी हूँ, मेरे से मत मांगो कोई अपडेट, मेरे पे कोई पाबंदियां मत लगाओ. मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ तो मैं जा रही हूँ, और मैं फ्रेंड्स के बाद जाने के बाद रैंडमली तुम्हें 12 बजे कॉल करके बोलूंगी कि हाँ अब एक ड्राइव के लिए आ जाओ या फिर मेरे को पिक करने के लिए आ जाओ, तो तुम मना कैसे कर सकते हो? हाउ डू यू हैव द ऑप्शन ऑफ सेइंग नो टू मी? आई मीन व्हाट इवन? ठीक है, बट एट द सेम टाइम अगर when tables are reversed, when the guy is going out, with his friends, and then you have a problem and you're like that, how does he have the heart to leave me at home and go and have fun? Who allowed him to have fun with his friends? And like, he expects me to be okay with it. It's that I found, and that I find like hypocritic and But then you've cringe. never pointed it out to me. Yeah, also because I'm a great friend. And a big part of friendship is feeding into the delusion. No, but I think we are definitely not those kind of friends. I do want you to support me in my crimes, but then definitely. But मैंने तेरे को कभी-कभी call out किया है बोलने के लिए कि क्या हो गया? No, राधिका? that you कोई have, but बात in very. नहीं, I think इंसान you're है. not, because you're not a preacher of tough love. तो जैसे मैं बहुत outrightly बोलती हूँ कि यहाँ पर you being an asshole. Yeah. But then you don't ever do that with me. You're always like नहीं, but you should be a little flexible here and this and that. But you know what? I agree to that because I'm self-aware. I have been working on that because because I am a believer of self-betterment. And I think overall only I was somebody who had a hard time accepting no's. Right? Because it's always my way Because or you're the a woman. highway for Yeah. me. No, not just a woman. I think a lot of women are flexible. You are case in point, you. Yeah. But I've been that, my way or highway sort of a person. No, I definitely think that there is a lot of change in you on that front. In fact, more than accepting no, I think कि देख, क्योंकि अगर किसी ने तुम्हें नो बोल दिया, कुछ बोल दिया, उसमें कुछ बुरा लगने वाली बात नहीं होती, राइट? बट इट्स जस्ट दैट इन दैट मोमेंट दैट इंस्टिंक्ट कम्स टू द फोर कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इस मोमेंट में. बट मोर देन दैट, वन थिंग दैट आई हैव नोटिस्ड अबाउट यू इज दैट यू बिकम मोर एंड मोर सोल्यूशन ओरिएंटेड. इट्स अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द फैक्ट दैट यू नाउ अ फाउंडर, सो यू ऑलवेज हैव टू meander and figure out कि हाँ ठीक है, सारी चीजें सही हैं, ओके, गुड लक, बट आगे बताओ अब क्या करना है. तो आई थिंक वो वाली चीज है. ऑल्दो आई डू फील कि द सेकंड क्रिंज थिंग अबाउट यू, इट्स नॉट एक्चुअली क्रिंज बट इट्स जस्ट रिलेशनशिप बिहेवियर कि आई डू फील कि रिलेशनशिप में तू सोल्यूशन ओरिएंटेड नहीं है. आई थिंक रिलेशनशिप में तू बहुत ही ज्यादा कि अच्छा नहीं हो रहा, ओके बाय, बॉय बाय वाली एनर्जी है तेरी. हाँ, ये है. Although मैं बाय बोलने में थोड़ा टाइम लगा देती हूँ, because that whole process of just snapping out of a relationship is not so easy, right? Yeah. And then I have a little bit of an anxious attachment pattern of what I've discovered. So it's not easy to snap out of it. But yes, once I understand and once I see things and I spot red flags, then I'm like, then I'm in my boy bye mode. Then I am. Yeah. So yes, I do agree. But honestly, I think कि जब उससे पहले सोल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए. वंस यू फिगर्ड आउट 10 रेड फ्लैग्स, ट्रू, तो फिर तो कोई पॉइंट नहीं है रुकने का. फिर नहीं रुकते साधिका, फिर निकल जाते हैं, फिर पूरी जिंदगी तक उसका हाथ क्रिंज बिहेवियर है कि साधिका छोड़ती ही नहीं है. मतलब रिलेशनशिप की लाश बन चुकी है, बट मैंने फॉर सम रीजन हाथ पकड़ा हुआ है. सो यू तो हैव दैट सेवियर वो. बट आई थिंक उससे पहले तक इफ देयर आर इश्यूज, इंस्टेड ऑफ एक्चुअली फिगरिंग आउट अ सोल्यूशन, व्हाट आई डू इज आई कीप
pondering over ये कैसे हो गया but वे कैसे हो गया but how could he do this but how could I not and how is my relationship making me feel such a way and all of those. So I dwell onto those things a lot. I maybe this nature will translate even in my relationship. Abhi I haven't been in one for years now, but maybe when I am. And you know, speaking of my ability to now accept no's is कि I think एक बहुत बड़ा factor इसका ये है कि I have now become a little more understanding even of men, which I wasn't ever. Quite interesting. Go So on. I was never कि I was never like कि लड़के की तरफ से सोचो, right? जैसे एक अगर एक डेट है तो लड़के को क्या फील हो रहा होगा, उस पे क्या प्रेशर होगा. इट वाज जस्ट अबाउट आई मी और मैं, राइट? तो आई वाज द सेंटर ऑफ माय वर्ल्ड एंड you know that's all that mattered. And you know, a guy was only supposed to come and add value. So now I think what has happened to me over years is that I've actually figured out that okay, you know, men are also human beings. I do not dislike men anymore. I think I totally respect and appreciate men as a fellow whatever of my species. Homo sapiens. I Acknowledge men as Homo sapiens. I think they have really progressed in life. yeah. Okay, I don't see them as demons anymore. So you know, they are fellow Homo sapiens. That's fine. But then at the same time, what I've realized is now I feel that okay, you know what? They also have baggage. Yeah. इनके भी issues होते हैं. ठीक है, ये भी थक रहे हैं अब. ठीक है, इनका भी बस हो गया. 10-15 साल से लड़कियों के पीछे भागी जा रहे, टेक्स्ट कर करके ये भी थक गए हैं. तो कोई बात नहीं, अब थोड़ा सा वो भी. See, it's cringe that men also now want princess treatment. Yeah. But then if you really think about it, and I'm not supporting it. I'm not supporting men asking for princess treatment. I still want to be the princess in the relationship. But if a guy actually does ask for it once in a while, I understand where they're coming from because they're so tired of giving and giving and giving कि उनको है कि यार अब कोई हमको भी पूछ ले. So you know, ever since my वो has changed, that POV has switched. No, I suddenly have become more warm towards the idea of men. Simply just that. And considering all of this, I actually came up with some first date rules. Okay. ठीक है, for just dating rules. Let's call them dating rules. So now So obviously ठीक है, first things first, before we come down to your dating rules, I think let's start ऐसे शुरू से शुरू करते हैं. ठीक है, तो ऐसे कुछ criteria है कि कौन से लड़के को like how a guy is going to win your first date. Are there certain criteria that you go by? Because it's not let's be very honest, we don't give the chance of, you know, going on a first date to everybody. Obviously, right? yeah. In fact, recently I was sitting with somebody and I ended up just saying very casually कि at any given point लड़कियों के पास ज़्यादा options होते हैं. They might not be viable options, but options तो options होते हैं. For sure. Right? But at the same time अगर वो viable नहीं है तो हम हर किसी के साथ date पे नहीं जाते हैं. तो पहले तो what are those 3 or 4 things that you would want a person to be or do जिससे they crack the first date? Coupon. Okay. ठीक है, so I think first thing first, because it all usually, if you're meeting somebody digitally, it starts with texting, right? So texting has to be good enough, right? And non-chat GPT guys, हाँ, please. please वो AI हाइफन मत लगा use होता है करो. लंबे वाला, सब पता चल जाता है कि वो हाइफन और वो जो इन्वर्टेड कॉमास हैं कि तुमने कॉपी पेस्ट किया है. Yes, so please no chat GPT messages. Be yourself, be genuine. Yeah. That is one. Texting में I think moderation होनी चाहिए. Don't be too desperate or don't be too cheap. Yeah. But at the same time, don't act too cool. If you're interested in a girl, let her know that you're interested in her, right? Don't act cool. You know, those mind games are for your 20s, right? Now you're of a certain age, you want something, go for it. Yeah, right? and Make it early 20s obvious. by the way. Late Yeah. 20s वाली एडवाइस मत लो. Yeah, but somehow I think जैसे जैसे dating old होती जा रही है और लोग थकते जा रहे हैं, वो mind games बढ़ती चली जा रही है because people are somehow becoming very strategic and I don't know why. I think, और मैंने अभी किसी को बोला भी था कि it's so ironical कि जहाँ पर इंसान को दिल लगाना होता है वहीं पर इंसान सबसे ज्यादा दिमाग लगा रहा है. हाँ, No? true. And इस सेंस में पता है मेरे को Gen Z फिर भी काफी cool लग रहा है because Gen Z is not playing mind games anymore. In fact, they are being too direct about But their I emotions. think Gen Zs are so, from the Gen Zs that I have seen around, वो तो बेचारे इतने traumatized है कि वो तो गिव अप ही कर चुके हैं डेटिंग पे. वो तो आगे मैदान में ही नहीं उतर रहे. वो नहीं, ये इतना तो डर है, चुके ये तो हैं. मैंने भी नोटिस किया है कि वो लोग बहुत ज्यादा डर चुके हैं. बट एट द सेम टाइम, यू नो, दे आर वेरी हार्ड ऑन द स्लीव्स काइंड ऑफ पीपल. फॉर एग्जांपल, द एंटायर आइडिया ऑफ टर्मिंग समथिंग एज अ यू नो टेक्सटेशनशिप और अ सिचुएशनशिप इज कि भाई वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ पुटिंग लेबल्स. पहले क्या होता था कि यू नो आवर जनरेशन वेंट थ्रू अ फेज वेयर वी वर वेरी अफ्रेड ऑफ पुटिंग लेबल्स ऑन एनीथिंग. कि ठीक है कि डेटिंग है या रिलेशनशिप है, डिफरेंस ही नहीं पता क्योंकि तुम कुछ भी एक्नॉलेज नहीं करना चाहते. उनके केस में तुम अगर
हाथ भी वो कर रहे हो तो उनके पास हर चीज के लिए टर्म है, Term है. वो इतने डायरेक्ट होके चल रहे हैं. बट या देयर इज Of skepticism course, I there. think there are definitely two ways to look Of look course, at of it. course. So I mean, it's good also in a way because they really know what they want and what they're in for. But at the same time, I do feel that it was supposed to be easy. Yeah. Matters of heart were always supposed to be easy. How did we humans manage to complicate them so much? So अभी डायलॉग बाजी हो गई मेरी, अब मैं आती हूँ वापस. ठीक है, वापस आ गए हम तो वहाँ पे कि आपका मॉडरेशन में टेक्सटिंग. मॉडरेशन में टेक्सटिंग होनी चाहिए. Now obviously because we are of a certain age now, so too much flirting and all was good when we were of a certain age. We were young and all. Then you can be cheeky and you can be probably asking for pics and whatever, being too flirtatious. सॉरी, फोन बज रहा था, भाई का फोन आ रहा है. ये हमेशा करती है तू, ये नहीं कि छोड़ दे फोन. हाँ नहीं. बट एनीवे, सेज राधिका जिसका फोन अभी एकदम नीचे उसकी एस के नीचे पड़ा हुआ बट है. साइलेंट पे है और बजेगा मेरा नहीं. भी साइलेंट पे है. बज रहा है ना, बट वाइब्रेट करता है हमेशा हर एपिसोड में वो. हाँ. परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन. मैं हमेशा प्रशासन बोलती हूँ, पता मैं भी नहीं पहले प्रशासन बोलती थी, मेरे को स्टोरी पे बहुत लोगों ने कॉल आउट किया. ठीक है. तो एक ये होना चाहिए. दूसरा ऑब्वियसली बहुत ज्यादा फ्लर्ट वगैरह मत करो, वो भी मॉडरेशन में वो करो. आई थिंक थोड़ी जब बात बढ़ जाए तब फ्लर्ट करना शुरू करो, एकदम से मत करो. दैट जस्ट शोज दैट यू नॉट वेरी सीरियस. तो आई थिंक ये शुरू शुरू में होता है. एंड so you know that I'm a good texter. So one thing about what I like is about me, and which I appreciate in the other person also, is कि don't be too direct. Everybody is too वो रील देखी है जिसमें एक लड़कियां पूछते हैं so what is your favorite color, और वो टॉकिंग स्टेज का डॉग बना के भेज देती है कि ये ले भाई तो पढ़ ले इसमें से. So no, everybody is very very bored of the talking stage. सब थक चुके हैं. Keep it interesting. Probably pick one thing about them and build a conversation on it. Yeah. And then as the conversation unfolds, sneak those questions. And I think मेरे को लगता है कि आपको questions sneak करने की जरूरत भी नहीं पड़ती. वो automatically ऐसा बाहर flow निकलते रहते हैं. बैठता है ना कि फिर Right. ऑटोमेटिकली आप 10 चीजें खुद ही बताते चले जाते हो. सो आई थिंक बी क्रिएटिव इन द वे यू टॉक टू समबडी. डोंट बी टू बोरिंग. एंड I'd say don't text too much. At least at a now that I'm into my own, right, and whatever, I'm very solid here and everything. I think too much texting will most often, because we have such fast paced lives also, it's पहले जैसा नहीं होता कि आज बात की फिर हफ्ते बाद बात कर ली फिर उसके बाद कर ली. Jump onto a call very fast. That is one. कि उसके बाद फिर आप जल्दी से फटाफट कॉल पे आओ, because now you finally will know कि अच्छा बंदा साउंड कैसे करता है, उसकी Agreed. टोन कैसी है. हाँ. Because if it's not a good person and you're not vibing Yeah. with him on call and everything, then there's no point actually spending so much time, investing so Yeah. much time, and it's like a Yeah. bad investment. और आप जितना 10 मिनट में एक इंसान के बारे में जान लोगे कॉल पे, उतना आपको 10 घंटे क्या आई थिंक ज़्यादा लग जाएगा टेक्सटिंग पे जानने में. सो कॉल्स ऑब्वियसली दे आर वेरी वेरी डिटेल्ड एंड दे गिव यू गुड इनसाइट inside whatever the person's nature, life, everything. And then if the call goes well, तो कॉल भी अच्छी जानी चाहिए. अब नेक्स्ट क्या आ गया, हम कॉल पे आ गए, तो कॉल अच्छी जानी चाहिए, आवाज़ अच्छी होनी चाहिए, बात करनी आनी चाहिए, अपने ओपिनियन शेयर करो. आई ऑब्वियसली वी लव ओपिनियनेटेड पीपल, men or women, but at the same time, well, if somebody talks about patriarchy and somehow supports it, or if somebody has very controversial POVs, then that's definitely something that throws me off. So overall, you should look like a decent person. If I feel that you're not अच्छा, मतलब, and I think एक अच्छा person का कहीं ना कहीं एक सिग्नल मिल जाए, दूसरा ambition का सिग्नल मिल जाए, तीसरा तो ये सब फर्स्ट डेट से पहले ही मिल जाना चाहिए तेरे को. yeah, मतलब कॉल पे listen, if I get on a call, because my calls can easily go up till 2 hours, right, and the other person won't even feel like keeping the call. It's just it genuinely flows, right? So 2 hours I feel are enough if you really have the knack for it. Right. 2 hours enough to get a sense Okay. कि एक इंसान को किस चीज में इंटरेस्ट है, क्या उसका करियर है, क्या उसके गोल्स और एस्पिरेशंस. आई थिंक एक थोड़ा सा फेयर आइडिया मिल जाता है. अगर थोड़ा थोड़ा फेयर आइडिया भी आपको हर एरिया में मिल गया, then I think then it's okay, because I think I wouldn't want to spend more than a week, 10 days also talking to somebody on calls. Yeah. Because that's also too much investment of my time. So talk on text, check, quickly jump to a call. Talk on calls, check, quickly jump to a meeting. And फिर मीटिंग के लिए तो फिर हमारे पास रूल्स हैं, तो उससे बात करेंगे. ठीक है, But- fair enough. So what's your take on this journey? I think कि अगर you're asking me what my
criteria is? No criteria or your take on this journey also. If you feel differently, because you know I've already listed a criteria. So if you want to add, subtract to it, whatever. But very comically, I think somehow I have only ended up dating guys, or I've only ended up being in talking stage with guys जिनसे मेरा कोई ना कोई connection रहा है. ठीक है? It could be anybody. It could be the people that have actually been in a relationship. I have first met them. In the sense that I have bumped into them somewhere and there has been a physical meeting first कि friends of friends के through मिल गए या फिर कुछ हो गया. So it has never started digital first. You know, I've always either seen them कि you know अगर college के time पे था, so I've seen that person be there in a certain society and I'm here in a certain society. So कहीं ना कहीं I have had that comfort of knowing कि हाँ ठीक है असली में ये इंसान exist करता है. Nobody is catfishing me. Nobody is, you know, like there is a legit person with 2 legs, 2 feet and everything out there. I love that, honestly, you know. I love that about you and your journey, that everything has been organic for you. More or less. Because I hate it. I hate it. You know, it's just that times are changing and you have to roll with them. Yeah. But, you know, if I had it my way, I would always want organic. You know, that's this beauty in no, I also am a big organic, believer of organic is like has more weightage for me Chalo, than good touch wood. हाँ because पता नहीं मुझे for some reason एक थोड़ी सी hesitation भी होती है कि अगर मैं सिर्फ virtually किसी से बात करी हूँ, so I think a part of me feels a lot of distrust and I'm a very trusting person otherwise. But मेरे को ऐसा लगता है कि यार पता नहीं कुछ भी हो सकता है. So मेरी skepticism mostly safety के around आती है. ठीक है, so dating में वो वाली चीज़ और 10 times heighten हो जाती है. और क्योंकि मेरे केस में मेरे को इतनी अप्लाई नहीं करनी पड़ती, तो मैं तेरे लाइफ में वो चीज़ भर भर के अप्लाई करती हूँ. लाइव लोकेशन शेयर कर, कहाँ जा रही है ये बता, उसके बाद तू कितनी बारी मेरे घर ही आ जाती है अपनी फर्स्ट डेट्स के बाद, विच आई लव. ठीक है, सो ऑल ऑफ दैट हैपेंस. ये ऐसे बोल रही है जैसे मैं रोज जाती हूँ, ये सालों पुरानी बातें हैं. प्लीज लेट मी क्लियर इट आउट. Yes, which means that her calendar is free, guys. So if you do want to reach out to her, then you should. So anyway, तो I think मेरे लिए कहीं ना कहीं जितने तेरे मार्कर्स हैं उतने मेरे लिए भी एग्जिस्ट करते हैं कि हाँ भाई टेक्सटिंग पे इतना ज़्यादा टाइम मत स्पेंड करो कि तुम्हें पता ही ना चले कि इंसान कौन है. कॉल पे फटाफट बात कर लो. Somebody like me loses interest if I text for too long. More often than not I will lose my interest. नाइस. मैं इंटरेस्ट लूज नहीं करती बट मैं इंटरेस्ट गेन भी नहीं करती. सो मेरा सस्टेन करवाना बहुत डिफिकल्ट होता है. तो कॉल पे भी मेरे को, सो आई एम नॉट अ बिग कॉल पर्सन. आई कैन ओनली मेक कॉल्स टू सर्टन पीपल इन माई लाइफ, अदरवाइज आई एम वेरी के डोंट टॉक टू मी. सो मेरे को भी होता है कि हाँ ठीक है फटाफट मिल लो. ऑल्दो आई डोंट पुट अ बिग प्रीमियम ऑन द फर्स्ट डेट. आई जस्ट फील लाइक इफ यू फील लेजिट, if you feel like a decent guy who's doing something decent with his life and on call does not sound disappointing at all, just say no slang for me, no whatever for me, then I will give you a shot. We will go out, probably on a coffee or something, and then I'll figure it out. But मैं first date बहुत ज़्यादा ऐसे screening वाला mode में बैठती हूँ कि first date पे You do? I do. Okay. I'm very open and susceptible to X on the first date. Okay. तो मैं observe काफी करती हूँ. Because there will come a point after which जब मैं नोटिस नहीं कर पाऊंगी. एग्जैक्टली. क्योंकि मुझे ये पता है कि अगर ये ऐसी 3-4 और डेट्स हो गई तो मैं अंधी हो जाऊंगी. तो मैं शुरू में बहुत ज्यादा ऐसे इन द मोमेंट रहने की कोशिश करती हूँ. आई एम वेरी ससेप्टेबल टू एवरीथिंग. इन फैक्ट व्हाट, आई स्पीक लेस ऑन फर्स्ट डेट्स. You know what? This is something I should learn from. Yeah? Learn from you. और ये चीज़ पता है मैंने बहुत वियर्डली पता है कहाँ से पिक करी है. सो बचपन में मेरे मॉम डैड एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते थे. ठीक है, और ये वाली चीज़ मैंने तब रियलाइज़ करी थी कि यार तुम एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हो, उसको भी तो सेंस है कि तुम क्या चीज़ें क्या दिक्कतें लेके आओगे. ठीक है, वो तुमसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता है, तुम उसका इतना बड़ा आंसर देते हो और फिर उसकी नेक्स्ट आंसर में वो तुम्हें एक बोलता है कि ये ऐसे हो रहा होगा, ये ऐसे हो रहा होगा, ये ऐसे हो रहा होगा. और तुम लाइक हाँ शिट आपको ये सब कैसे पता? बिकॉज यू आर गिविंग अवे सो मच. एग्जैक्टली, आप खुद ही सब कुछ बता रहे हो तोते की तरह. एग्जैक्टली. तो वो तो गेस कर ही लेगा ना, वो तो 2+2 कर लेगा. ये मेरे को साधका से सीखना पड़ेगा. ये वैसे मेरी बहुत बड़ी गलती है. मेरा ना वो वाला सीन है कि थोड़ा सा पूछने पे सब बता देती हूँ मैं. कहीं चैट जीपीटी तो नहीं. सो दिस इज अ वेरी गुड हैक कि अपने बारे में तो बताओ बट दूसरे के बारे में सुनने दो. दिस इज योर टाइम टू एक्चुअली एनालाइज इंस्टेड ऑफ सेलिंग योरसेल्फ, which actually maybe I'm not doing, maybe unconsciously I am doing, right? Consciously I'm not trying to sell myself. I'm very confident that the person will, either like me or not like me, and either way it's absolutely fine. It doesn't matter. Right. But yeah, I mean, but good pro tip. हाँ, very very good tip. ठीक है. ठीक है. Okay, चलो अब हम डेट पे आएंगे उसके बाद. ठीक है. ठीक है. तो अब चल डेट हो गई. The person has cracked the code to the date, first date. First date rules क्या है तेरे? तो मैंने तो एक लिस्ट बनाई है बिकॉज आई हैवंट
I've been off the market for a while now. So whenever I start to go out on dates, and I probably will, either mummy papa will hook me up with somebody and I will have to go out on dates through an arranged marriage, whatever, or maybe through whatever, a dating app, or maybe dating. So I actually kept in mind all the things that I want for myself, and also at the same time being sensitive towards लड़कों की क्या struggles है और लड़कियों की भी क्या issues होते हैं. Okay. So first things first, I will keep it an early evening or lunch sort of a date. ठीक No है? late nights. No late nights. And No alcohol? late nights. No. No alcohol also. Okay, good. Maybe a drink or two, because I can handle alcohol pretty well. So maybe a drink or two. But keep it early evening. ज़्यादा लेट मत होने दो, because A, safety concern. दूसरा क्या रीज़न है वो मेरा सेकंड पॉइंट आएगा. इससे जुड़ा हुआ मेरा सेकंड पॉइंट ये है कि आई विल गो अलोन एंड आई विल कम बैक अलोन. आई डू नॉट वांट एनीबडी coming to pick me up or drop me back home. So naturally, if I stay till late, then इसे बोलते हैं कर्मा. अभी मेरे को सुनाया जा रहा था कि साधका अपने फोन से जुदा नहीं होती है, और यहाँ पे तेरा फोन गाने बजा रहा है. अरे अलार्म था यार. क्या खाने का? 7:30 हो गए ना, तो डिनर गए. ठीक. चलो ठीक है. तो क्लियरली तेरी डिनर डेट्स जल्दी होती हैं इवनिंग में. तो मैं नहीं चाहती कि कोई इंसान मुझे ड्रॉप करे, ठीक है, या फील करे नीड टू ड्रॉप मी बैक होम. एंड ऑल्सो बिकॉज इट्स द फर्स्ट डेट, ही इज प्रैक्टिकली अ स्ट्रेंजर. व्हाई शुड आई बी इन हिज कार वेर ही इज ड्रॉपिंग मी बैक होम? सो एंड नाउ फॉर द सेकंड क्या है rules. The second rule, there are 2 reasons behind it that why I want to go alone and come back alone. One, safety reason, right? I don't want anybody knowing where I live. 1. 2, I don't want anybody dropping me back home, especially if it's a late night, which is again connected to rule 1, because right. So और इसका दूसरा reason ये है that don't you think it's unfair to the guy? Let's say if he lives, No. it is. So let's say अगर वो बहुत दूर रहता है, ठीक है, या फिर हो सकता है, या लड़के भी थक जाते हैं, वो भी पूरा दिन काम करते हैं. आई थिंक इट इज अनफेयर फॉर मेन टू बी एक्सपेक्टेड टू बी शोफर्स. तो बहुत लड़कों ने मुझे पिक किया, बहुत लड़कों ने ड्रॉप किया. माई फ्रेंड्स हैव डन दैट ड्यूटी फॉर मी, माई फ्रेंड्स स्टिल डू दैट ड्यूटी फॉर मी, एंड इफ आई एम विद समबडी आई वुड एक्सपेक्ट हिम टू डू ऑल ऑफ दिस फॉर मी. बट आई एम फाइनली at a place in life where I want it to be easy. At least the first few dates, I really want them to be easy on the guy. So he shouldn't feel the need of coming and picking me up. And plus, Delhi traffic is getting insane by the day, right? It's crazy. So I don't want all that trouble on the guy either. Wow, that is too evolved and nuanced for me, because मेरे को तो उल्टा लगता है. मेरे को लगता है कि यार 3-4 डेट्स के बाद तुम वैसे ही कंफर्टेबल हो जाओगे, तुम वैसे ही बोलोगे कि चल ठीक है डायरेक्टली यहाँ पे मिलते हैं. एटलीस्ट शुरू के 2-3 डेट्स पे तो you should experience that treatment where somebody is coming to pick you up and you guys are talking in the car a little and there's some mystery around. If the guy is has the whatever enough romantic enough to not tell you कि हम कहाँ पे जा रहे हैं. So that anticipation build up and everything. So my scene is that all the dine and wine and all the picking and dropping can come later when things get serious. Fair. Because that is when I will get demanding and I would want you to bring me the moon and the stars. But until we get there, and most likely we will not get there, because well, that's the reason I'm still single, right? So I don't want it to be unnecessarily heavy for the guy. So all that picking and dropping and petrol ka wo, and uske baad itna traffic and all of that, it's okay. I'll come myself, I'll go myself. My third rule is pick the place that's very low key. Don't go to a roadside thing. I am so happy with roadside momos also. But take a place which is very low key. उसके 2 reasons है. First, लड़के पे pressure ना है. Ideally, I would be splitting the bill. I know I have argued against splitting the bill. उसके बहुत ही ज़्यादा economic or nuanced reasons है. But in my case now at this age, I want to split the bill, because I don't want, let's say the guy doesn't get a second date, then I don't want him to feel that fuck, Go with the impression कि कि यार मैं इससे मिलने भी गया, इसको इतना भाव भी दिया, मेरे पैसे भी खर्च हो गए, और देखो बात भी आगे नहीं बढ़ी. So tomorrow, let's say if it doesn't work out and I say no to the guy, I don't want him to sit with a sour feeling that he spent on me. And it's also unfair, because let's say a guy actually has to go out with 10 girls, right, in 1 month, because जो भी है वो जा रहा है, right, उसको नहीं मिल रही है, क्योंकि कहीं पर भी बात नहीं मिल रही. वो 10 लड़कियों को जा रहा है. इमेजिन वो 10 लड़कियों को पिक कर रहा है, 10 लड़कियों को ड्रॉप कर रहा है, 10 लड़कियों को खाना खिला रहा है.
that's just too much. Oh my god, these sounds like first world single boys problem that you are addressing. Yeah, but whatever. You know, I just feel that it's unfair to men. So that is one thing. But let's say if the guy is such, because there are guys like that also, कि कुछ भी हो, they will not let you pay. Whether it's the first date or the 10th date, they will just not let you pay. And they'll actually, you know, kind of snatch the bill from you and they just won't. तो उस केस में बिल अगर होगा ही थोड़ा सा, you know, 1500-2000 रुपए का बिल होगा, तो वो उसको बुरा भी नहीं लगेगा देते हुए. So, you know, pick a low-key place so that, you know, Okay. there's not too much pressure on the guy. And even if he doesn't let you split the bill, It's not burning a hole in his pocket. Yeah. Okay, got Yeah. it. So these are, I think, my three. And obviously fourth is no getting physical. हाँ, you know, I feel But like I think that वो is very हमेशा से एक important. रूल है, तो ये मेरे लिए कोई नया रूल नहीं है मेरी डिक्शनरी में. I think first dates पे it's too soon to get involved with somebody because, I mean, good things have happened to me so far in my life, but you know, it's life is unpredictable and anything can happen any moment, and we live in a world where of extremes where, you know, people can really surprise you or disappoint you, so never take that chance. Okay. But because it was already a part of my rule book to not make out on the first date. Okay. Nice, interesting. Yeah. I think मेरे rules थोड़े से different हैं. मतलब मेरे non rules हैं थोड़े से कि पहला rule जो है मेरा वो ये है कि I don't want to be drunk on the first date. Also because, you know, you're going to meet the person, you want to get to know the person, and if you're too drunk, then everything he says will either be funny or charming or, you know, whatever. So मुझे होता है कि भाई be in your senses, ठीक है? इसका safety reason भी है of course, and I anyway don't ever drink as much जिसको पहन के मैं अपनी 6 इंच की heels में catwalk ना कर सकूँ. You know, that is my rule कि wherever you go, whether it's for a party with your friends or with your boyfriend or date, you should be able to handle your liquor like a pro. Always, yeah. So, you know, like अगर थोड़े से भी हिल रहे हो तो कोई बात नहीं, you cut it out. तो पहला तो ये है कि no alcohol. दूसरा, I don't mind the guy picking and dropping me. In fact, I take deep notice of the guy when he's driving a car. Really? Yes. What notice? What do you notice? So basically, I just feel like कि see, it's about judging instincts of a person, right? Because उन 2 घंटे में तो everybody is putting out their best foot forward, ठीक है? Including us. We also want to sound very polished and, you know, like, oh my God, yes, I totally believe in this and, you know, politically whatever, correct. But क्या होता है जब तुम दिल्ली की रोड पे गाड़ियां चला रहे होते हो ना, तो 10,000 लोग तुम्हारा खून ऐसा किलसाएंगे ना कि और उसमें गालियां तुम्हारी निकलती हैं। गालियां निकलेंगी. चलो कोई बात नहीं, गालियां तो मेरी भी निकलती हैं, बट पॉइंट ये है कि वो तो उस तुझसे मोमेंट ज्यादा ही में दे देगी वैसे भी. Agreed, but Without being stuck in traffic. Don't abuse on the first date. Save it for the third. ठीक है, मतलब थोड़ा सरप्राइज होना चाहिए तुम्हारी स्टोरी में. तो anyway, मेरे को ऐसा लगता है कि यार वो प्रेशर सिचुएशन कैसे हैंडल कर सकता है, वो बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है. और वो प्रेशर सिचुएशन कुछ भी हो सकती है कि सडनली सामने कोई आ गया, क्या है उसका इंस्टिंक्ट, क्या वो डॉगी पे गाड़ी चढ़ा देगा या फिर वो एक न्यू डिसेंट इंसान की तरह स्वर्व करेगा उस डॉग को बचाने के लिए, ठीक है. विल ही लेट द वुमेन क्रॉस? फॉर एग्जाम्पल, वन थिंग दैट इज वेरी अंडररेटेड फॉर मी इज कि व्हेन आई एम ट्राइंग टू क्रॉस अ रोड, ठीक है, और यहाँ से गाड़ी आ रही है And they और stop. एंड दे स्टॉप एंड दे लाइक कि आप पहले जाओ. मेरे को वो लोग इतने प्यारे लगते हैं ना, मुझे मतलब यू नो शाउट आउट टू ऑल दोज पीपल हु एक्चुअली सी सर्टन पीपल ट्राइंग टू क्रॉस और स्ट्रगल टू क्रॉस एंड स्टॉप देयर कार्स एंड लेट देम. आई जस्ट फाइंड देम That's very very sweet. nice. That's actually a very है ना? chivalrous thing to do. Yeah, I think it's very Do underrated. you think that you also judge their driving? Because I know how good your father and your brother are Yes. at driving. Yes. And not enough men are. You know, a lot of men Agreed. live in this misconception that Bubble. they're good drivers, Yeah. but they're not. And you know what? Even if, let's say, I don't drive. I mean, I know how to drive, but I don't drive. So, but it's still very easy to tell कि कोई स्मूथली ड्राइव कर रहा है या कोई नहीं कर रहा है, या उसको ठीक से आते हैं नहीं, या फिर वो अपनी रेस कितनी ज्यादा दबा रहा है, कैसे नहीं कर रहा, वो कटिंग कैसी कर रहा है, वो सब बहुत Agreed. easy होता है डिटेक्ट Agreed. करना, even if you're not a driver, so women can tell. Yeah. And a lot of men don't drive that good, by the way. Yeah. But Ankar and Viren, they drive very Yeah. well. So No, that is actually quite like you were bang on that, because you know I just feel like, and maybe this is the patriarchal part in me, ठीक है, हर किसी का वो जो थोड़ा सा पेट्रियार्की से अटैच्ड एक आइडिया होता है ना, मेरे लिए एक बहुत बड़ा मैस्कुलिन या फिर बहुत ही सेक्सी ट्रेट है लड़कों में इफ दे नो हाउ टू ड्राइव वेल. मेरे को पहली बात तो जब लड़के ड्राइव कर रहे होते हैं तो मेरे को बहुत कुछ तो उसमें बहुत मैनली और सेक्सी सा लगता है, ठीक है, वो स्पेशली जब एक हाथ से ड्राइव कर रहे होते हैं. आई जस्ट and फील then you लाइक see the veins also on their yes, and the veins on their hands, oh my god, I really like Actually, it. I've never understood women and their fetish with the veins Veins on the hand? हाँ, पता नहीं मेरे को It नहीं just है. looks
you know there is no logic behind it. मुझे नहीं I है, have but realized कि इसके apparently पीछे है logic कि ही यहाँ नहीं पे है. वो जो लड़कों की बड़ी प्रॉपर वेन्स हाँ. दिख रही होती है वो लड़कियों को टर्न ऑन करती है लाइक मेरे को तो खुद की वेन्स भी टर्न ऑन करती है जब मैं जिम में होती हूँ और जब मैं हेवी लिफ्ट कर रही होती हूँ मेरे को सडनली एक वेन पॉप करती हुई दिख रही है, यस दैट्स द शिट. तो मेरे को लड़कों को लगता है कि भाई इफ यू नो हाउ टू हैंडल योर मशीन देन लाइक ब्राउनी पॉइंट्स फॉर यू. मतलब मैं बहुत ज्यादा अंदर नहीं, मतलब अंडर माइनस जज नहीं करूंगी तुम्हें, बट मैं डेफिनेटली ब्राउनी पॉइंट्स तुम्हें जरूर दूंगी फॉर ड्राइविंग वेल. ठीक है, Next. बाकी इंस्टिंक्ट वगैरह समझ आ जाएंगे. तीसरा रूल है टू ऑलवेज नोटिस कि वो वेट स्टाफ से कैसे बात करते हैं. That's तो ठीक very है, important. क्योंकि अगर कोई ओ हेलो हीरो बॉस और ऐसे ऐसे करके बात कर रहा है तो भाई तुम जाओ वापस जहाँ से भी तुम आए हो और थोड़ी सी तमीज सीख के आओ. तुम अपने वर्क प्लेस पे जहाँ पे बैठे हो, अगर तुम्हारा मैनेजर कल को तुम्हें छुट करके बुलाने लग गया तो फिर वो छो से कुछ और ही निकलेगा तुम्हें, छो से जो भी है. ठीक है, सो आई जज ऑन दैट. चौथा, स्प्लिटिंग द बिल इन एवरीथिंग. देख, फर्स्ट डेट पे I think I have the same instinct कि I would want to split the bill, not because of anything else, but because I can. ठीक है, so I don't want to attach anything else to it. But yeah, अगर मैं कर सकती हूँ तो मैं वो कर दूंगी. तू मेरे से बात ढंग की कर. हम बिल पे और पैसे पे तो बाद में आएंगे. तू मेरे को वैसे exactly वैसे engross कर, then we'll see. Also, I'm okay for the guy to drop me home, although I strongly agree with your point कि भाई it's a stranger. First of all, why should you be in his car? Second of all, why should he know where you live? Right? Unfortunately, that is a concern with us. But beyond that, मैं इससे बहुत strongly agree करती हूँ. तो ये मेरा hypocritical reason है. But चलो by chance, तुम्हें अगर कोई drop कर रहा है, I would want to see their instinct when they're dropping me home. Do they lean in for a kiss or not? should they or should they not? Yeah, I think they shouldn't. It's the first date. Come on. हाँ, they shouldn't. Right. I agree. I'm very charming. I agree कि मैं माहौल ऐसा क्रिएट कर दूंगी कि तुम्हारा मन करेगा कि तुम लीन इन करके मेरे को किस करो. बट क्या तुम होल्ड बैक कर पाते हो? That also says a lot. Of course. So I think ये मेरे थोड़े से छोटे मोटे ऐसे वाले No, all rules your हैं. rules are very justified and I totally support them, but then you shouldn't let the guy drop you. That is true. Or That even is pick true. you. If he's a stranger, no. If he's a stranger, then definitely no. So that is something I'll take from you actually. कि I will make it a practice कि ऐसे मैं So we've random both लोगों को learned ना one बोलूँ thing कि तुम from मेरे each को other. pick करो. मैं ज़्यादा बोलने दूंगी और Agreed. तू खुद जाएगी. हाँ, और मैं खुद जाऊंगी. And why don't you guys, like drop your checklist of first dates and first date rules in the comment section so that, we can talk about it and maybe we can learn something from your checklist. कि आपकी first date पे rules क्या होते हैं, आपकी first date देने का अपना criteria क्या होता है. We would love to know that.